Good morning, students of class 3. Today I'll be doing your lesson 15, present continuous tense. Now, last time I did with you all simple present tense. Okay, simple present tense I had done, where you have to add, like if it is singular here, so you will add s. Okay, and if it is plural, you are not going to add s. Did you understand? Now I'm going to do simple present continuous tense. Read these sentences. I am making a mask. That is, you're doing at present. Okay, present what you are doing, that verb addition of ing will be there. Like cut vegetables. To be vegetables katcho. Katcho. Cho, that is ing. আমি এখন কাটছি, কাটলাম, that is past. काटलम means past. काटची माने এখন भी करे जाच्छो, अभी भी तुम वो काम कर रही हो. काट रही हूँ जो है वो तुम्हारा इंग होता है. ठीक है. आई एम मेकिंग अ मास्क. हम मास्क बना रहे हैं जैसे. द मैन इज़ कटिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ. आदमी कपड़ा काट रहा है, अभी कर रहा है, तो उसमें इंग लगेगा. कट में इंग लगेगा. वी आर ईटिंग मैंगोज़. वी आर ईटिंग मैंगोज़ मतलब अभी हम आम खा रहे हैं, अभी कर रहे हैं. इंग का मतलब है अभी फ़िलहाल वो काम हो रहा है. इंग मानेटा हलो ওই কাজটা এখন भी হচ্ছে, এখন করছি. Did you understand? The words in bold are verbs in the present continuous tense. We use the present continuous tense when we talk about things happening at the time of speaking. যখন আমরা কথা বলছি তখন ওই কাজটা হচ্ছে, তার মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স. এখন যে কাজটা হচ্ছে, এখন মানে প্রেজেন্ট, যে কাজটা হচ্ছে মানে কন্টিনিউয়াস টেন্স. Did you understand? I am making a mask. Now if it becomes past, then it will be in the question I was making a mask and my father hit me. That is past. When you change this verb, then it will become past tense. But here I am means ekhon jeta hocche. Is means now. Okay. Now is and are you're using for many, that is all. We means we have to use are. Okay. We were, otherwise if it was past we would write we were. Okay. Now for future you will write I will be making a mask. I will be, that you learn afterwards. Now you learn this one. Now come up. The form of present continuous tense are im, am, is, are. These are verbs. यही वर्ब से मुद्दे तुम्हारे इंग लगाते हुए, ये वर्ब्स में तुम लोगों को इंग लगाना पड़ेगा. देख, जैसे कि एम वाला इज़ एंड आर, ये है तुम्हारा वर्ब के साथ जो भी लगेगा. इज़ कटिंग, इज़ स्लीपिंग, स्लीप वर्ब है. इज़ स्लीपिंग दोनों मिलाकर वर्ब होगा. ठीक है. आई एम स्पीकिंग टू माई आंट. माया इज़ स्लीपिंग. इज़ स्लीपिंग वर्ब होगा. तो इज स्लीपिंग, एम स्लीपिंग, ये सब होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में. क्या इंग आने से ही होगा कंटिन्यूस टेंस. बस इतना दिमाग में बैठा लो कि इंग ING इंग आशले माने कंटिन्यूस टेंस, माने काजटा होए जाच्छे, এখন भी হচ্ছে, করছিলাম, করে যাচ্ছি. মায়া ইজ স্লিপিং. The children are playing in the park. Children, বাচ্চারা এখন भी পার্কে খেলছে. We use the present continuous tense when something is happening for the short period of time. ছোট্ট টাইমের জন্য যখন কাজ হচ্ছে, then we use ing in that. I am learning pottery during my summer vacations. We also use the present continuous tense to talk about the changes that are happening. Summers in India are becoming hotter. When there is some change there, কোনো কথা মধ্যে चेंजिंग, किचु बदलाव आता है, तब भी हम लोग बोलते हैं. जैसे कि समर इन इंडिया आर बिकमिंग हॉटर. समर इंडिया में गर्म होता जा रहा है. गरम होए जाच्छे.
সামার এখন গরমকালে গরমটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, ট্রাফিক ইজ ইনক্রিজিং ইন সিটি, ট্রাফিকটা বেশি হয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে ইং। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? নাও টিক দ্য কারেক্ট অপশনস। শি ইজ রাইটিং, she are writing or is writing a letter. So she is one, so it will become is writing. The child is drinking or am drinking. Now for it is not I. For I you use am drinking, but for the child is one, so you'll write is drinking milk. Grandpa am fishing is fishing. The grandpa am fishing hobe na, I will be for am, so you'll write grandpa is fishing. Grandpa is one. Okay, by the way, I is helping, am helping my mother in the kitchen. तो I के साथ am लगेगा, तो ये वाला गलत है, ये वाला राइट होगा। am helping my mother. We are waiting, am waiting, तो we के साथ बहुत सारा है इसीलिए are लगेगा, तो we are waiting for the test results. Anik is going और am going, Anik is going होगा for the concert. The lakes are blooming is blooming. Lakes অনেকটা, তার জন্য are blooming correct with the water lilies. I am studying are studying, I সঙ্গে are হবে না, so this is wrong, this is correct. I am studying for the exams. The people is standing are standing. The people মানে অনেকটা, the people are standing in the at the railway station. The people is standing is wrong. Okay, now I am watching is watching the news. So he am watching, he is watching, it can't be he am. Did you understand? Do this exercise and show it to your class teacher. That is your homework. Okay.